Well, it's month of May and this is how national capital Delhi looks like. Well, usually in Delhi in month of May, it's scorching heat. But right now, if you can see around me, the weather is very pleasant. And in fact, the national capital also witnessed heavy rains from the last couple of days. And not only from the last couple of days, the IMD has also predicted that rains will continue in Delhi till the 4th of May. So yes, this is unusual because at this point in time in Delhi, in the very 1st of May, generally people witness a temperature of around 35 to 40 degrees Celsius. But right now the temperature is hovering somewhere around 24 degrees Celsius. And in fact, there was a dip of drastically 10 degrees Celsius in temperature yesterday when rains and thunderstorm hit the national capital. Well, in fact, the IMD has also said that these weather conditions are prevailing due to an unusual disturbance in the atmosphere. And in fact, not only that, it's a worrying sign also because if we look at totality right now, Delhi's temperature is not usual, and in fact it's also affecting the health of the people, because we have to understand that when the temperature keeps on changing very frequently at a given point of time, it also affects our health both physically and mentally. And in fact, if we go by the experts, these weather conditions will not only prevail in the national capital, but these conditions will prevail in adjoining states like Uttar Pradesh, Haryana and Punjab as well. And in fact, if we go by the facts, this is the very first time in the month of May Delhi is witnessing such temperature. In fact, you can see around the haze, the clear weather. This is something which is unusual to the people of the national capital. And in fact, usually when it's this time, the temperature is somewhere around 40 degrees Celsius, as I told you. And in fact, this is a time when people usually have to bear the scorching heat here in the national capital. So reasons are very simple as per the IMD. The IMD has said that there is an unusual disturbance, and in fact, one worrying sign is also that since this condition is stretching in the national capital, we can also expect a hotter weather in coming days. So right now, it's definitely a relief for the people of the national capital, but it's also a worrying sign because frequent fluctuations in temperature do affect our health, and in fact not only our health, but it is also a sign of global warming. And in fact, not only global warming, but when we talk about the unusual rain, it also affects the crop yields. In fact, in the state of Himachal Pradesh, usually this is the time when the apple, the fruit of apple is in fact being bloomed in the state, and in fact due to these unusual rains, these crops will be affected heavily. And in fact, not only right now, in fact we have seen a month before also there were actually rains in the national capital, and so right now Delhi feels like February instead of May. आप दिल्ली घूमने आए हैं, पहले भी आप दिल्ली आ चुके हैं, ऐसा मौसम कभी आपने विटनेस करा है मई के महीने में? आज तो बहुत बढ़िया मौसम है। हम अभी कश्मीर से हम ड्यूटी करके आए हैं, घूमने के लिए इंडिया गेट आए थे और मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है आज। और हम तो सोच रहे भगवान का ऊपर वो साथ दिया जो हम इधर घूमने के लिए आए हैं और मौसम बढ़िया साथ दे रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप पहले दिल्ली मई के महीने में कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ऐसा मौसम आपने देखा है दिल्ली में? नहीं देखे सर, कभी भी नहीं देखे हैं सर। तो इस बार मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि बढ़िया मौसम आया है, घूमने में बहुत मजा आता है। दिल्ली में पहली बार ऐसा मौसम देखा है हमने। पहले भी हम दिल्ली में कई बार आए, लेकिन उस टाइम क्या धूप रहता है, गर्मी बहुत रहता है, घूमने में प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन इस बार मौसम बहुत ही अच्छा है, घूमने में काफी मजा भी आ रहा है हम लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं कि पहली बार आपने दिल्ली का मौसम ऐसा मई के महीने में महसूस किया है? जी सर, ऐसा पहली बार ही महसूस किया है हमने। ठीक है, तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, देखिए मौसम तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना एक थोड़ा सा हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो अच्छा ही लग रहा है मौसम, क्योंकि हमको तो वैसे घूमने में मजा आ रहा है अभी। ऐसा मौसम में हमको लगा अगर ऐसा मौसम नहीं होता, धूप होता तो बहुत गर्मी होता, प्रॉब्लम होता हमको भी। अभी अच्छा लग रहा है हमको इधर। इस बार तो सर मौसम बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम लोग बार बार आते हैं और हम लोग श्रीनगर जाते रहते हैं, तो इस बार का मौसम बहुत ही बढ़िया है। पहले तो ऐसा मौसम नहीं था, और आज का मौसम बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट है। हम चारों तरफ घूम भी रहे हैं और भी घूमेंगे, इंडिया गेट की तरफ जाएंगे।